रोल हैज टू इंटरेस्ट यू फर्स्ट. पहले आपको इंटरेस्ट आना चाहिए स्क्रिप्ट में, जी रोल में. जो मेकर्स जो बना रहे फर्स्ट अरे सेकंड थर्ड में आना ही चाहिए ना. इट वाज लाइक दैट. सो आई हैव ऑलवेज बीन अ लिटिल के नहीं या नहीं बाद में बताऊंगी, जब कुछ अचीव कर लूंगी तब मैंने बताऊंगी. या जब सीजन 1 और 2 फॉलो किया था, मैंने सोचा नहीं था कि मैं सीजन 3 करूंगी. हाय, दिस इज हेली दारूवाला एंड यू आर वाचिंग IWM बस. Hi guys, welcome to IWM Bus, and today we have Harry Daruwala. So firstly, Harry, welcome to IWM Bus. हाय, आई एम सीइंग यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. After a very long time, Yes. Zoom से बाहर आ गए हैं. How is going on? All good. How are you? You tell me. All good. Harry, now you're coming with a new project, Andekhi. क्या Yeah. कहना चाहेंगे सीजन 3 में? How your character will impact the show? So this is my first uh, OTT, as in my first project on OTT. Um, I'm very thrilled to be a part of this exciting Yeah. series because मैंने सीजन 1 और 2 फॉलो किया था. मैंने सोचा नहीं था कि मैं सीजन 3 करूंगी, but I'm very excited that I'm a part of such a nice show. It's so well written. The character has a lot of shades. It is something very interesting that I've not played before. So that's all I can tell you for now. Yeah. But बट जितना भी हमने अभी तक प्रोमो में देखा है उसमें से कुछ और दर्शा रहा है. नो इट्स शोन लाइक यू आर टेकिंग केयर ऑफ द टेकिंग केयर ऑफ ताऊ जी, जो जिसके Papa बारे ji, पापा जी जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है of शो में. course, he's such an amazing actor. To have screen space with Papa ji, Harsh ji, is only. Uh, I mean, it's as an actor, it's a very beautiful experience. There's so much to learn from him and from Debu sir. And yeah, you will see soon. अभी मैं कैसे बता सकती हूँ क्यों क्या है और क्या नहीं है. ओके, टॉकिंग अबाउट अनदेखी होनी, जैसे कि आपने कहा 1 और 2 आपने देखा है, तो वाज दैट लाइक कि आपको शो ऑफर होने के पहले आपने देखा था या आफ्टर गेटिंग द शो ऑफर यू हैव No, वॉच्ड no, I had watched it एज because अ ऑडियंस? as an audience, because obviously I'd heard so many good things about it, and मेरे काफी friends है, especially guy friends, they really like it, and they were like ये देखो. तो मैंने देखा हुआ था. Obviously I Yeah. loved the way it was written. Season 1 was amazing. Even 2 I couldn't watch much, but then I had to watch it obviously when I was True. doing 3. So I always knew about the show. I liked the show. एंड देन इट हैपेंड मच लेटर कि उन्होंने मुझे मतलब एक स्क्रीन टेस्ट हुआ था एंड ऑल दैट, एंड देन आई गॉट द पार्ट. When your friends know कि आप अनदेखी 3 में हैं, जिन्होंने फोर्स किया था 1 and 2 ये देखने देखो को. ने उनको पता नहीं था, बट वी वर शूटिंग इन मनाली. सो Yeah. व्हेन आई वेंट टू, आई वाज देयर फॉर वी वर देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, 25-30 days. Oh, The whole show is in Manali. yes. I absolutely love Manali. I was like, I think I had so much fun Yeah. filming this show ना. I can't tell you. The location was amazing. Yes. So जब मैं वहाँ थी और फिर थोड़े कभी कभी कोई को एक्टर के साथ फोटो डाल दी, कभी फ्रेंड्स, आई मीन द ग्रुप में सबने फोटो डाल दी, तब माय फ्रेंड्स गॉट टू नो. अदरवाइज मैंने किसी को कुछ बताया ही नहीं था. I was How just they like, reacted? they were like, oh my god, you didn't tell us and all that. But I am a very private person till it happens. True. Happens. मतलब जब तक वो आ नहीं जी. जाता तब तक मैं सोचती हूँ कि बाद में बताऊंगी. Actors always give their projects like हाँ, मतलब it private. depends. It's not only acting related. कुछ अगर कुछ और भी कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल जब मैं स्कूल में भी थी ना, तो मैं बताती नहीं थी कि मैंने मतलब जब तक हो कि ना क्या जाए. पढ़ाई की हाँ. है ना. फिर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आना ही चाहिए ना. इट वाज लाइक दैट. सो आई हैव ऑलवेज बीन अ लिटिल कि नहीं नहीं बाद में बताऊंगी, जब कुछ अचीव कर लूंगी तब बताऊंगी, या जब जी. ये प्रोजेक्ट हो जाएगा तब So बताऊंगी. Helly is that kid जो हमेशा बोलता है कुछ नहीं आता नहीं है, नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कुछ नहीं आता लेकिन है. फर्स्ट नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलती. मैं बोलती हूँ चल रहा है, मतलब मैं पढ़ रही हूँ, देखते हैं क्या होता है. हेली, अगर बात किया जाए ओटीटी की, हाउ यू सी हैज एन एक्टर एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म, कितना अपॉर्चुनिटी लगता I है? think it's amazing that OTT has I mean, done so much for not only actors, but everyone who is in this field, from writers to actors Yeah. to say producers to directors. बहुत सारी opportunity खुल गई है, बहुत सारी Yes. लोगों को chances मिल रहे हैं, कितना सारा talent हम देख रहे हैं, और एक पूरा अलग medium है जिसमें you can just like be at it, and if I feel that if you have it in Yeah. you and you have the talent, you will be able to show it to the world. So True. it's a good medium. It's a very very good medium that actors like us get a chance to at least show the Yes. talent. Yes. Yeah.
as an actor to do some show or a project, what you always wish list? What is your wish list? Like you want like this to be tick 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 from your side. I think the role has to interest you first. पहले आपको interest आना चाहिए स्क्रिप्ट में, जी. रोल में, जो मेकर्स जो बना रहे हैं एज अ होल ओवरऑल प्रोजेक्ट में जी. आपको इंटरेस्ट आना चाहिए जब आप वो पढ़ रहे हो. देन ओनली यू कैन डू जस्टिस Yes. to the show or the character that you're doing. And then second is the character, like how much you're able to, like how much you are convinced with what is written for your part, and it should be interesting, it should be थोड़ा challenging. I mean, I try कि ये ऐसा कुछ करे कि पहले ना किया हो या ज्यादा मतलब to experiment, Yeah. to explore, but it's not the case that every time you will get something, but then you can give it your own element also. Yes. So it should be basically interesting and you should be convinced about the project. Yes. Halle, you have done songs, you have done TV series, now OTT also. Yeah. जब आप हर एक प्लेटफॉर्म पे काम करते हो, how is feel like? Is there anything more you want to do apart from this? Like, Of course, movie, as an actor, I want to do everything, but I love all the platforms. is मैं there any comparison goes on your head कि नहीं अभी OTT किया है तो सिर्फ OTT पे ही फोकस किया जाए या मूवी पे ही फोकस किया जाए? no, like I said, like if the part is interesting, if a project is interesting, Yeah. be it be any medium, I think television has been the greatest medium for me. आज आप आपको मैं कितने टाइम से जानती हूँ True. because of television, and it has been the greatest medium for me, and I'm so grateful for television. Now that as an actor to explore this opportunity on OTT, I'm very grateful for that also. And music videos तो I love. I love the space of music videos. तो वो तो मैं हुई, वो मैं कहीं नहीं जा रही. जी. So I love all the mediums. As an actor, I want to explore everything, and every Yeah. medium is different. Halle, So आपको for sure offers कई सारे shows के आते होंगे. What's make you say yes or no? Like, is that any particular thing for a TV show you want to do, or like apart from the genre you want to choose some different genre? so TV shows हो या कोई भी, I mean कोई भी project हो, I don't want to just say TV show या OTT, any project, I like I said, it should be interesting, it should be something that I've not done before, and it's challenging, but as an actor Yeah. it is thrilling. But something in my wish list, if you ask, then I've been a Kathak dancer all my life. Yes. So I want to do something in period drama space, Wow. something where there's dance and acting together True. happening, then nothing True. like it. So that has been on my wish list since a very long time. कभी कभार टेलीविजन में मैंने वो साइड एक्सप्लोर की है, but I have never experienced it like a full, as in on an OTT or somewhere. Yeah. I would love to explore that side. I hope आपको भी ऐसे कुछ नए I show hope so, my मिले. God. I would be so happy doing that. हाली बात किया जाए, आपके सॉन्ग्स काफी ही सुपर हिट रहे हैं. नो, आपने जितने भी अभी तक एल्बम किए हैं वो काफी ही सुपर हिट रह चुके हैं, काफी प्यार मिला है. डू यू थिंक कि जब आप गाना लेकर आते हो या कोई गाने में आते हो फॉर अ एल्बम, यू पुट योरसेल्फ इन अ वे कि मेरा ये गाना अब ये वाला गाना भी सुपर हिट होना चाहिए, ये गाने को भी इतने व्यूज मिलने चाहिए, देयर शुड बी अ बेंचमार्क. इज देयर एनी बेंचमार्क फ्रॉम योर साइड? Yeah, I would like all my songs to do very, Yeah. very well now. But first of all, as I said, you should like the song, or you should like the team that you're working with. You should like the singer you're collaborating with. वो तो बेसिक है कि जी. अगर आपको ही नहीं पसंद आ रहा तो आप उसको जस्टिस कैसे करोगे. But obviously, I want all my songs to do well. बट देयर इज it- ऑलवेज लाइक ना कि ये गाना ट्रेंडिंग पे होना चाहिए, बिकॉज कंपटीशन लेवल काफी बढ़ गया नहीं, म्यूजिक मैं इंडस्ट्री में भी. आप आजकल देयर शुड बी लाइक नो टॉप ट्रेंडिंग, हंड्रेड्स मिलियंस व्यूज. मैं इतना प्रेशर तो नहीं लेती हूँ. ऑब्वियसली जो मेकर्स है, जो लेबल ओनर्स है, Yeah. प्रोड्यूसर्स, ऑब्वियसली they all want, I mean even I want कि Yeah. all the songs should do well, or the song should be on trending and everybody should be making reels or dancing, especially if it's a dance song. Then yes, I would wish कि everybody dances to it, because we made it with love and passion. For True. me, I am very, very happy just doing a song, क्योंकि maybe I like that song so much, और इतनी बार हम सुन लेते हैं in that process, that it is just a part of you then. And then I only enjoy my songs more than anyone else. तो मुझे फिर जब एक बार out हो जाता है ना, then I don't take the pressure. उसके पहले हम सोचते रहते हैं क्या होगा, कैसे होगा, will people like it or not. Yeah. But then once it's out, then I am only enjoying more. You'll see so many reels. I am only making on my own songs. I make my friends do it and all. So then it's a destiny. Every song True. has its own destiny. So बट वी लव योर कोलैब विद दर्शन. दर्शन आप
ने जितने भी गाने लाए वो काफी हमें पसंद आए हैं. Thank you so ऑडियंस much. आल्सो लव दैट. He क्या is a कहना very good चाहेंगे अभी singer. भी? तो ऑल ऑडियंस ऑलवेज वांट दैट यू एंड दर्शन शुड कम विद अ न्यू कोलैब अगेन. इज देयर एनीथिंग? Hopefully, I don't know, very soon. He's an amazing singer. Yeah. Of course, I love all his songs, even if I'm there in it or not there in it. He is an amazing singer. Maybe soon, anytime. टॉकिंग अबाउट अनदेखी, इफ वी अंधेकी को काफी ही प्यार मिला 1 and 2 में. सीजन 3 में यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द शो. व्हाट इज द बिगेस्ट चेंज यू सी हैज एन ऑडियंस नाउ? अगर आप हैज एन ऑडियंस देखोगी तो सीजन 3 में क्या एक चेंज हमें देखने को मिलेगा? But I was not in season 1 and 2. बट हैज एन ऑडियंस यू हैव सीन Acha, आल्सो. as an audience, I was Yeah. like, sorry about. Yeah, I think the story. बिकॉज एक्सपेक्टेशंस लेवल्स ना हाई होती है सीजन जैसे जैसे Yeah, नए so there सीजन are a आते lot हैं. of twists and turns and a lot of surprise elements and a lot of new characters. So story is very gripping. The way they have written it, आपको पता नहीं चलेगा अच्छा ये हुआ है अच्छा इसके बाद ये होने वाला था but कुछ और हो जाता है. So it's going to be there's a lot of surprise element that बट I can say. हैज बी सीन इन अ प्रोमो फादर सन का वो बॉन्ड भी काफी देखने को मिलने वाला है. इज इट दैट? अब मैं कैसे बताऊं मैं नहीं बता सकती हूँ. Still asking me the same question but you'll have to watch Andekhi on 10th of May on Sony I Live. just want Hellu to say something. कुछ और बातें करते हैं. क्या खाया आपने सुबह? अनदेखी पे ही बातें करते हैं. As you said, मनाली में शूट किया. Yeah. मनाली में शूट करना is not easy also. No. अगर वेदर सपोर्ट No, किया. I've done a lot of songs in Manali. Yeah. So I was used to मतलब I have done songs in extreme snow जब in November and all. Oh. तो मैंने वो वाले वेदर में शूट किया और वहाँ सॉन्ग्स में तो यू आर वेयरिंग लाइक ग्लैमरस क्लोथ्स Yes. एंड स्लीवलेस ड्रेसेस एंड ऑल दैट इन माइनस टेम्परेचर. तो मैंने वो वाले मतलब माय आइडिया और माय first experience of Manali shooting in Manali was that. But in Andekhi we went around September तो weather बहुत अच्छा था. Supportive weather. नहीं मतलब cold था but बहुत I love Manali so like I have no complaints. बहुत अच्छा आपने weather था. एक्सट्रीम से मैंने start बहुत किया. ज्यादा एक्सट्रीम Extreme कोल्ड से में start शूट किया किया हुआ था. है वो भी सॉन्ग्स यू नो Yeah. वेयर you are not covered a lot and all. इसमें it was pleasant, it was nice. The team is amazing. We had a great time. So when you showed at a real life location Yeah. place, how was that experience? कितना कुछ learning होता है as an actor. But to मेन मार्केट में घूम रहे हो बट किसी को पता नहीं चलता कि द शूट इज आल्सो इवॉल्विंग ऑन द सेम टाइम. Yeah. You have to be very much aware of your surroundings. Also, you don't have to disturb the people who are True. around क्योंकि you're shooting at a live location and I think it's different than shooting on a set every day na Yes. when you're just doing 9 to 9 going to your makeup room So, set yeah. pattern है. So this is very different and as an actor also you have to be prepared. मतलब इतना time नहीं ले सकते तुम कि तुम आराम से you know you're taking 20 days 25 days. You can't do that. You have to be Yes. prepared. You have to be like very well read Prompt, and yeah. I mean with your character you should be like you should be able to give that performance in very less takes possible because light भी जा रही होती है लोग आ रहे होते हैं लोग shoot देख रहे होते हैं तो थोड़ा disturbance उसमें भी होता है. So yeah, as an actor you have to be like right there and be on your toes and be prepared. How was that Manali period for you? Like कितना enjoy किया personally? No, like I said, I had a great time. Any food you because- have explored or any place you have Yeah. There is a cafe. I happen to know him. There is a cafe called the Lazy Dog. Oh. It's there in Goa also. I didn't know Yeah. it was in Manali also. He's my friend's friend. So I didn't know. So my friend, she told me कि जाके try करना. So I love pasta. I Yeah. love pesto. I love everything related to pasta, pesto, pizza, Italian food. So every day I was eating that pesto spaghetti every day. Wow. But because the weather was also cold, right? And we Yes. were walking, हम लोग चल रहे, बहुत ट्रैकिंग भी होती Yeah. थी. In the sense, जब शूट पे जा रहे, location to van या room. So I think that was okay for that period of time. Finally, one message for the audience जो हमेशा आपको प्यार देती हुई आ रही है. Even on your reels also, people show us love. काफी ही वायरल होते हैं आपके reels भी. क्या कहना चाहेंगे? So I would just like to say thank you to my audience who've always been there. Thank you to IWM Buzz who have always been there. They've seen my journey from my first show till now. And yeah, please keep showering all your love like you've always done. And watch Andekhi on the 10th of May and let me know how you liked it. And God bless you all. Thank you.
Thank you so much, Helly, for giving your precious time and all the best. Thank you. Thank you so Thank much. you.